अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश फूड, लेकिन हम लोग हमेशा टर्किश फूड देखते रहते हैं। आप लोग भी कहते हैं कि टर्किश फूड, लेकिन आप फूड जो है पाकिस्तान का ही बहुत मज़ेदार है। और हमें एक जो लिंक मौसूल हुआ है बड़ा यूनिक है। इसमें एक जो यूट्यूबर हैं, इन पे हमने पहले भी रिएक्शन किया हुआ है, लेकिन तब भी टर्किश फूड ट्राई कर रहे थे। अब ये कर रहे हैं पाकिस्तानी फूड ट्राई, वो भी पाकिस्तान में आकर। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, देखते रहे कौन कौन सा फूड ट्राई किए, क्योंकि हमें तो पता हो कैसा है और हम लोग को उस पर आपको बताएंगे कि इनके रिएक्शन अच्छे थे या नहीं। तो हम भी आपको बताएंगे। फौरन चलाते, लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको रिएक्शन पसंद आए, इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। चले फौरन देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या फूड दिखाया Welcome to Pakistan. We're Luke and Sabrina, and in today's episode we're going to be doing things a little bit differently. We're in the capital city of Islamabad. We're going to be eating some desi food, which is local food, but we're also going to be sampling some of the Western options here in Islamabad. It's a melting pot of cultures and traditions in a very progressive city, so there's a lot to see and do. It's going to be a great episode with our friends from Manaki, so make sure you stay tuned until the end. Let's go eat some Pakistani and Western food. मैं पहले बता दूं, फूड के मामले में जो सिटीज़ पाकिस्तान में मशहूर हैं, एक तो लाहौर है, कराची है और पेशावर है। जो फूड के मामले में पूरे जो दुनिया में मशहूर ज़्यादा है। इस्लामाबाद जो है थोड़ा सा वैसे खूबसूरत बहुत है, लेकिन फूड के मामले में अगर हम उसको रेट करें तो ये नंबर 4 पे आता है पाकिस्तान में। सरीना होटल बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद में, हमारा वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पाकिस्तान। So we're sitting in the beautiful courtyard here at the Serena Islamabad. The birds are singing and we've got ourselves a nice breakfast, some pastries here, chocolatines and croissants, coffee, an omelette, and orange juice, and I just love the setting here, so it's gonna be a perfect way to start our day before we hit the streets of Islamabad. So nice light breakfast. We saved room specifically because we're going to head to one of the many cafes that Islamabad has to offer and have a little bit extended breakfast this morning. We are here at Burning Brownie, which is a really cool cafe here in Islamabad. And like you said earlier, we're going to be trying some different options while we're here because there's so many good options here in Islamabad for Western or different types of cuisine. So that's what we're here for. We're going to have some amazing coffee and really good treats. So wait till you see what we've ordered. So this is a really chill cafe and they have some seriously good looking desserts. We've ordered up a bunch of different things and they brought out even more. And first of all, Sulmeen here from Manaki has this beautiful latte. Look at that latte art, that looks amazing. Sabrina's got herself a macchiato, and then I've got myself a flat white. And then we've got a bunch of different cakes. So the first one is this biscoff, and they've cut them in these like long shapes, which is kind of... ये बहुत मज़े की ब्राउनीज हैं और इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं अलग अलग फ्लेवर की और बहुत ही नटी और बहुत ही मज़े की। Interesting. This is their fudge, which I've heard is quite popular. And then back here we've got this one called caramel crunch. ये वेस्टर्न है। हाँ, ये पाकिस्तानी डिशेस में नहीं आता, लेकिन ये पाकिस्तान में भी मिलती हैं। लेकिन जो वेस्टर्न में इनका टेस्ट है, उसमें पाकिस्तानी ये टच के साथ होता है। हाँ, तो ये और मज़े की लगती हैं। There's caramel on the top, and then they're burnt cheesecake. And wow, this looks seriously good. Who would have known this is here in Islamabad? I'm pumped to dig in. Okay, I'm gonna start with this caramel crunch, and whoa, that is super soft. Let's try. It's really crunchy on the top, and it's really smooth, soft on the inside, and not overly sweet at all. That's awesome. It kind of reminds me like a tiramisu. So they brought this one out complimentary for us. This is their burnt cheesecake, and I've heard it's really good. Let's try this one. I don't like it. अफीरा को चीज़ केक नहीं पसंद, लेकिन मैं खा लेता हूँ, लेकिन बहुत मज़े का होता है।
That's heavenly. Just a slight tangy hit from the cheese, and then you get that kind of smoky, burnt layer on the top. Okay, I'm gonna have a serious sugar high after this. ये आइसक्रीम के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उसको जैसे मिल जाए वैसे ही खा जाता हूँ, आइसक्रीम हो या ना हो। अफीरा के लिए, अफीरा को ना कोई ना कोई चीज साथ चाहिए पूरा। चॉकलेट मेरे लिए चॉकलेट ऐसे है कि हेवन है, मैं उसको नहीं छोड़ता, चाहे किसी भी फॉर्म में मुझे चॉकलेट मिल जाए मैं खा लेता हूँ। लेकिन इसके साथ आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। हाँ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद चॉकलेट इज वेरी नाइस। Trying all of their different sweets here, and this one is the fudge. Really rich, but again, not very sweet. Totally different than any like traditional Pakistani sweets, which tend to be quite sweet. These are actually light. So this is our biscuit, and check this out. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6 layers there of different things, and then topped with this crumble too. Oh man, the sweets here at Burning Brownie are absolutely incredible, and so cool to have it in such a nice, chill setting. Wow. मजे का होगा। They're all so नटी और good. जूसी, ये बहुत मजे का, इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। कैरमल भी है, चॉकलेट भी है, लाइट चॉकलेट भी है, जूसी भी है, जूसी भी है इसमें, और बिल्कुल बीन्स भी है इसमें, कॉफी भी है इसमें, बहुत कुछ। That one might be my favorite. Nice and crunchy in the bottom. Amazing service, such a nice change to all the traditional desi food that we usually have here in Pakistan, and we want to show you some alternative options and all of the local restaurants, because there is a lot of good stuff here in Islamabad, especially like Burning Brownie. So we're sticking with our Western theme for lunch today. We've come to a restaurant called Howdy's, and they're supposedly serving... I love Howdy. अच्छा, ये ना पाकिस्तान की जितनी वेस्टर्न टाइप के जो फूड्स हैं वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के जो उनके जो हमारे जो किसी देसी फूड कह सकते हैं, या जो हमारा अपना रिवायती फूड है वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो वेस्टर्न फूड मिलता है वो दिखा रहे हैं। जो ये भी इंटरनेशनल चेन्स हैं सारी। इंटरनेशनल, हाउडी भी इंटरनेशनल है। The best burger here in Islamabad. बहुत We're अच्छा gonna go burger get होता है। ourselves a nice juicy burger for lunch. Yes. Wow, thank you. Oh, welcome All with us. How many bouquet flowers This is that is Pakistan? number 3. This one's gorgeous. Look at it. Really nice. Oh, हाउडी इनका का स्टेक, इनके हाउडी का बर्गर्स, बीफ बर्गर, वाओ, अमेजिंग। यस, इनके स्टेक्स, इनके Steaks बर्गर, बहुत इनके मजे- शेक्स बहुत मजे के शेक्स हैं। मजे के, हाँ। Yummy. So Howdy is a Western-themed restaurant, kind of cowboy style. Cowboy, and they specialize in their charcoal grilled burgers. Yes. So we've ordered up their specialty. It's called Son of a Bun, which is a Son of a bun. We love it. We love it. हाँ, बहुत ही मजे का बर्गर बहुत है ही ये, मजे का। बहुत ही अच्छा फ्लेवर्ड है, स्मोकी सा, और Yes. बहुत ही अच्छी इनकी सॉसेज होती हैं। और हाउडी में सबसे ज्यादा चलने वाला बर्गर यही है, सन ऑफ अ बन। great name, and I'm super excited to try it. Awesome. So this got 2 beef patties, double cheese, and turkey strips, and all the veggies. Wow. Whoa. How are we बहुत going to do हैवी this? बर्गर होता है ये, ये आप एक बंदा पूरा खा नहीं सकता है खा इसको। नहीं सकता। पेट भर जाता है आपका। Go to sleep after. Food coma. Look at this absolute beauty. That is massive. So we've got, 2 patties, veggies on the bottom. There's turkey strips in it, and the bun is so ridiculously Yummy. soft. That is a thing of beauty. Look at all that cheese. I'm so ready to dig into this. ऐसे ही मुंह खोलना पड़ता है। वेरी सॉफ्ट बर्गर, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा फेस खोलना पड़े और ये खाया नहीं जाता। ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम सा होता है, जूसी सा। Oh man. Seriously. Oh. The bun is so fluffy and soft, and then those veggies are super crisp and fresh. Yes. And although it looks like it looks like it would be a greasy burger with all that cheese, it actually feels a little bit lighter than it looks. And then you get ये the nice देखने में बहुत smoky बड़ा है। charcoal flavor on there. Oh man, Oh man. that's phenomenal. I love the sauce. Yes. Wow. Cheese Okay, so this sauce. is their fish burger, and it has like a Oh, fish burger. cheese. Look at that. Oh. Oh man. It has a cheese patty on the inside, like a fried cheese cutlet, and then 2 fish mixed with prawn grilled
burgers, and then some lettuce and stuff on the bottom, and that beautiful bun. मजे का होगा, हमें पता है क्योंकि हमने टेस्ट किया हुआ है। हमने खाया हुआ है, हमने हाउडी बहुत खाया है। हम तो इनके रिएक्शंस देख रहे हैं, हमें पता है कैसा है और बहुत मजे का है। Oh, so cheesy. So both of the burgers definitely have a little bit of a local Pakistani flavor. There's some spice in there. Yes. Local Pakistani. They're Local, also just true burgers. Look at that. Super cheesy, and they're just super juicy burgers, and there's gotta be like a sweet chutney on this one. Caramelize onion. Whoa. Yummy. Salt Bay has nothing on this. So that was Howdy, the best burger in Islamabad. I think I'm confident saying that. That was a seriously damn good burger. And if you're looking for a Western option, that is a great restaurant. They've got all kinds of different cheese. ये animal fries थे। Animal fries और थे। ये wings हैं। Wings हैं। हाँ, ये wings हैं। ये बहुत मजे के। Honey mustard wings कहते हैं। items, and we really wanted to show you guys some Western options, because if you're coming to Pakistan, you're eating a lot of desi local food. Sometimes it gets a little bit much and you want to switch it up. So we don't normally do this. ये बात सही है कि आप जब किसी और शहर में मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर लोकल फूड खाते हैं, फिर कभी कभी आपका दिल करता है थोड़ा सा वेस्टर्न भी खा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर स्पाइसी फूड होता है। और जितने हैं फॉरेनर्स आते हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्पाइसी खा लिया, आप थोड़ा सा वेस्टर्न भी खा लें जो कम स्पाइसी हो। But I thought it was a good change. But tonight we're gonna have some more desi food, but we're gonna take a break back at the Serene and build up an appetite again after those big burgers. काबुल रेस्टोरेंट। ये देसी खाएंगे। हाँ, ये देसी। ये पेशावरी और देसी टच आएगा इसमें, देखें? ना वही तुर्किश। This is Pakistani shish kebab and koftas and सब कुछ ये बहुत मजे के। They have plenty of other options, and when you hear this noise, you know that it is the katakat, which is. ये Tahseen का favorite। This is my favorite. It's called टकाटक और कटाकट जो भी कहते हैं, और ये बहुत ही मजे की चीज है। जब भी आप पाकिस्तान आए, तुर्की वालों को, अजरबैजान वालों को ये जरूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। Basically, all the organs, and they're all mixed up and minced up with tomatoes and all kinds of things, and then it's a brain, liver। हाँ, liver, brain होता है, heart होता है, और kidneys होती हैं। बहुत ही मजे की चीज है। And they've also got karahi. I can see more kebabs. This place is just crazy, and it's such a smoky restaurant, and this little alley is just full of flames and smoke and delicious smelling food. One thing I love about Pakistan is at these kebab restaurants you have these massive troughs of charcoal. They're gonna be, I don't know, 12, 15 feet long, and you can put hundreds of kebabs on there at one time. So we got 3 of the dishes that we've ordered, and the first is this beautiful plate of rice. This is the Afghani style pulao. So there's carrots on top, and then all these dried raisins, and then the rice. There should be some meat underneath. And then we've got 2 different types of skewers here. The first is the Afghani tikka, and then the second is the Afghani Kabob, this one right here. But I'm gonna go in first of all for this. Oh, I can feel there's a big piece of meat underneath there hiding underneath. You see that? So let me get some of that meat. ये बहुत सॉफ्ट राइस होते हैं, बहुत सॉफ्ट राइस होते हैं, बिल्कुल भी आपको खाने के बाद भारीपन फील नहीं होगा। और अफगानी में बने हुए होते हैं। अफगानी जो फूड है ये बहुत ज्यादा आपको ना प्रॉब्लम नहीं करता, आप कोई भी आप इसको खा सकता है, और ये ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होता। जैसे पेशावरी खाना भी स्पाइसी नहीं होता है, बिल्कुल। जैसे अब तुर्किश आप लोगों का खाना भी ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है, फुल ऑफ फ्लेवर, फुल ऑफ टेस्ट ऑफ मीट, और हार्ड को जिसे कह सकते हैं ना कि आप मीट लवर हैं, तो फिर आप ये अफगानी फूड खा सकते हैं। And some of the toppings. It's such an interesting ingredient to have those raisins in there. It's a little bit sour and sweet at the same time. They just burst with juice. The rice is all oily and covered in all the flavors. I didn't really get any of the meat though, so let me go back in here and pull some of the meat apart. Oh man, that is super tender feeling. Perfect. And then I love these carrots. They're like a red carrot. And gotta make sure you get a little bit of those raisins too.
is phenomenal. I could eat that whole plate of rice, I think. Yes, देखा? Okay, I'm gonna try the Afghan style tikka. You can see the piece of fat there. It looks like there's quite a bit of cumin. I've got some ऐसा naan तुर्की में bread. मिलता है ना? Pull this अंदर off. फैट लगा हुआ. And I gotta grab a piece of that fat too. Try it like this. Wow, the piece of fat completely melts in your mouth right away, and it's quite salty actually, and just a little bit of cumin, and the dominant flavor is just all that smoke. And I gotta have it with a little bit of raita. So there's raita, and there's also chutney. Raita is this yogurt here. Have a little bit of that. Oh man, that is just super, super good. Oh man. Oh. So this is the Afghan Kabob. It's slightly different. It's minced meat, and there's a couple pieces of tomatoes on there as well. Gola Let me pull off one of those. A little bit of raita. Similarly as good, but I would say it's a little bit drier. And I like that tomato in there. It gives a nice burst of fresh, sweet tomato flavor. Yum, what a meal so far. And oh, I just noticed there's another dish on the table over here. This looks like the karahi. कढ़ाई. No, this is also mutton kadai, yes. Wow, let me grab some of this. Bring it over to my plate, and you can see all that tomato in there too. हाँ. Yeah. टोमेटो में बनी हुई है. Karahi is just the name of the device that they're cooking it in, but it's also a specific dish. Oh man, that's nice and बहुत hot मजे की still. होगी. Super tender. Seriously. बहुत मजे. मैं तो मटन नहीं खाती हूँ, लेकिन इस तरह खा लेती हूँ. इतना मजे का ये बना हुआ होता है. बहुत अच्छा फ्लेवर होता है ये. हाँ. That's a totally different flavor profile than the pulao or the kebabs. It's all that vegetable. ये भी इसे कह सकते हैं कि देसी फूड नहीं है पाकिस्तान का, ये अफगानी टाइप का फूड है. जो अफगानिस्तानी जो यहाँ पर पाकिस्तान में है, वो ये फूड उनका बेसिकली अफगानिस्तान का देसी फूड है. ये अभी भी हार्डकोर पाकिस्तान का देसी फूड नहीं है. Flavor, there's onions in there, tomatoes in there, and the meat is just cooked perfectly, which is a common theme here at New Kabul restaurant. All the meat's super tender. That was some seriously good food. Nice change up from the Western options we were having this morning to some classic local desi food. And this place is absolutely packed. And right around the corner, there's a really interesting chai spot. So we're gonna go try that out. चाय स्पॉट, हाँ, कूलर वाली चाय. गरम कर रहे हैं. कैलोरी कितनी? चाय बन रही है. चाय उबल के बाहर आएगी. वो उसका चारकोल जैसा फ्लेवर आ जाता है. कूलर का फ्लेवर आता है. हाँ, फ्लेवर आ जाता है. So this chai place is doing things really interesting. What they do is they have a tandoor oven with these clay cups inside of the oven. Some of them are heated just a little bit, and then some are actually completely red hot. So he grabs one of those red hot chai cups out of there and then puts it in the pot with the tea and lets it kind of boil away. And I guess that's adding a flavor. I'm not really sure. We'll find out once we taste it. But he boils it in this cup and it overflows back into the pot, and then he serves it into the cups that are just warmed up a little bit. They're all clay cups. I'm really excited to try it out and see if it tastes any different. बहुत मजे की चाय होती है ये, बहुत मजे. Our last stop of the night is for some midnight chai at Tandoor Junction. You can get a couple different kinds here, but one that I've never had before is the kind that I've ordered. It's cinnamon, and you have ginger? Cinnamon. I have ginger too. Ginger's a really nice one to have as well. It's really soothing. Let's give it a try. Cheers. Cinnamon बहुत मजे की. हाँ. cardamom tea. Cardamom cinnamon जो That's mix होती है. lovely. I think that the cinnamon creates more of an aroma than an actual flavor, but the chai itself
is really good. It is really, Yes. it's really nicely made. It's fresh. It's just the right kind of thing to wash off the palate after the entire day of eating also. Yeah, and we ate a lot today, so this is just a perfect way to wrap up a whole day of eating food here in Islamabad. Does it taste any different because of the tandoor, do you think? It does taste a little different because of the matcha. It does. Okay. Yes. It's always nicer to drink chai from a clay pot than anything else. Islamabad's really good. It surprised me. There's really a lot here. I think a lot of people think Islamabad's just quick stop, no food, no culture, but really it's got its own thing going on. It's really unique from the rest of the cities in Pakistan. So Absolutely. I think people should really try to come here in They Islamabad. should come to Islamabad, and Islamabad is growing by leaps and bounds because it is the center point for people, whether they're traveling up north, whether they're going off to other countries. So it's growing, as we say, exponentially, and we welcome everyone to Islamabad. Yes. Huge thank you to Sulmeen from Manaki for hosting us in Islamabad for these past 2 days. If you haven't checked out the last video, I suggest you check it out. All right, that's it for day 2 here in Islamabad. Another incredible day, and awesome to try out something new today. Try some of those Western foods. Let us know down in the comments what you thought about that, and finishing off the day with some incredible local Desi food. I want to say huge thank you to Manaki for partnering with us on our trip here. They are the ultimate resource for everything Pakistan. So if you guys are considering coming to Pakistan, and we highly recommend you do, because this is one of our favorite countries in the entire world to travel to, check out manaki.com. All the information's down in the description box, and we'll see you guys on the next episode of Chopstick Travel soon. Bye. 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 बहुत ही अच्छी और यूनिक वीडियो थी। इन्होंने वेस्टर्न फूड पाकिस्तान में दिखाया। इस्लामाबाद जो है वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, देखने के लिए भी, रहने के लिए भी, और वहाँ पर फूड जो है अभी रिसेंटली ग्रो होना शुरू हुआ है। पहले यहाँ इस्लामाबाद में इतना फूड नहीं था, लेकिन इन्होंने जितना भी फूड दिखाया है ये पाकिस्तानी फूड नहीं है, कुछ वेस्टर्न था और कुछ अफगानिस्तानी फूड दिखाया जिसको देसी फूड कह रहे थे। वो बेसिकली पाकिस्तान का देसी फूड नहीं हो सकता, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो उसमें टच पाकिस्तानी डाल सकते हैं, कुछ फ्लेवर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसका अफगान काबुल रेस्टोरेंट जिसका नाम रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का जो अपना एक फूड है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो स्पाइसी भी होता है थोड़ा सा। क्यों फिर? हाँ बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगा। और हाउडी का बर्गर नो डाउट बहुत अच्छा है, और चाय बहुत अच्छी थी, और कबाब नो डाउट, काबुली पुलाव, ये सब कुछ जो था वो हमने खुद ने टेस्ट किया हुआ है, इसलिए हमें पता है कि वो बहुत ही सब मजे का था और अमेजिंग। बहुत मजे की वीडियो थी। थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।